अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दे आर ऑन सम वेरी की एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट तुर्की, स्पेशली इफ़ यू आर अ फॉरेनर। आपको यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा सम बहुत ही मेन की पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी ये समझने के लिए कि इफ़ यू वांट टू मूव टू तुर्की, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए एंड व्हाट थिंग्स यू विल फेस, एंड ओवरऑल परसेप्शन तुर्की का एज अ फॉरेनर क्या है, ये मैं आज वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि तुर्की में आप अपनी फैमिली के साथ मूव हों, या अपनी रिटायरमेंट के बाद मूव हों, या जस्ट फॉर वेकेशन पर्पस मूव हों, तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें सही से एक्सप्लेन करूँगा, सो यू कैन टेक अ बेटर इंफॉर्मेटिव डिसीजन फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर लव्ड वन लाइफ। लेट्स ट्राई जंप इन एंड लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ तुर्की लाइक? तुर्की एक्चुअली है कैसा? हम वीडियोस में देखते हैं कि तुर्की इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, लॉट्स ऑफ टूरिज्म आर कमिंग इन, बहुत सारे टूरिस्ट मंथली बेसिस पे आ रहे होते हैं, बहुत इस्लामिक कंट्री है, बहुत खूबसूरत कंट्री है। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तुर्की इज़ एक्चुअली अ मल्टी फेस्ड कंट्री। यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, और लेकिन आपको सेक्युलरिज्म भी नज़र आएगा कहीं ना कहीं। और यहाँ पे कुछ एरियाज़ बड़े कंजर्वेटिव हैं, ख़ास तौर पे जो रूरल टाउन्स या सिटीज़ हैं वहाँ पे काफ़ी कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के लोग रहते हैं टुवर्ड्स इस्लाम। बट इफ़ यू मूव टुवर्ड्स बिगर सिटीज़, द मोर एरियाज़ विच आर अर्बनाइज्ड, like Istanbul, Izmir, Ankara, Antalya, Marmaras, Fateh and many more, वहाँ पे आपको डेवलपमेंट भी थोड़ी डिफरेंट मिलेगी, आपको ज़्यादातर फॉरेनर एक्सपेक्ट पॉपुलेशन मिलेगी, वहाँ पे फॉरेनर्स की कम्युनिटीज़ मिलेंगी आपको, एंड ऑफ कोर्स यू वुड इन्जॉय दैट ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वेस्ट यूरोप एंड एशिया together in those kind of big cities. Turkey, like I said, is a beautiful country. It has all four seasons here, beautiful beaches, बेहतरीन sunny weather in summers, and बहुत अच्छा winters में winter का weather होता है, और it's basically cultural aspects is west और east का बेहतरीन cultural mix है। और यहाँ पे जनरल फीलिंग आपको तुर्की में रहते हुए ये होगी कि यू आर लिविंग क्लोज टू यूरोप। ओवरऑल टर्किश पीपल आर वेरी फ्रेंडली, very honest, very welcoming towards their guests and the foreigners, but most of them does not speak English. If you're going into a tourist area, वहाँ पे आपको इंग्लिश बोलने वाले तुर्किश ज़रूर मिलेंगे in the restaurants, in the shops and on the streets as well. But as much as you go into the residential areas, वहाँ पे जो malls हैं, shops हैं, वहाँ पे probably आपको ज़्यादा English speaking वाले नहीं मिलेंगे. So one thing you need to make sure before you move to Turkey, that you must know a little bit Turkish at least when you move, and try to learn Turkish as quickly as possible. At least कम्युनिकेशनल लेवल पे आप इतनी बोलना आपको आनी चाहिए कि आप जो आपकी डेली लाइफ है उसको आप मैनेज कर सकें। ओवरऑल is Turkey worth living? And yes, Turkey is a beautiful country, and compared to Western countries and in Europe countries, Turkey is bit relaxed, cultural भी, environmental भी, social political aspect से भी, and in big cities you can find a big good amount of expat communities as well. So moving on to our next question, is living in Turkey a good idea? जहाँ तक मेरा व्यू है, Turkey has a best climate, and Turkey has a good health care system
अ गुड लाइफस्टाइल, यहाँ पे आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा बना सकते हैं। एंड जहाँ पे मोस्ट ऑफ द एक्सपेक्ट्स जो फॉरेनर्स हैं, दे एक्चुअली कम टू इन्वेस्ट बिकॉज दे फाइंड गुड वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। इन 1 ईयर और 2 ईयर उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न उनको बहुत अच्छा मिलता है, including the good climate, the good food, the good healthcare system, a good lifestyle for them and for their families. Before you decide to move to Turkey, you must know कि आपको कहाँ रहना चाहिए, कहाँ के अपार्टमेंट की प्राइसेस क्या हैं, एंड इफ़ यू वांट टू कम ऑन रेंट तो रेंटल प्रॉपर्टीज़ कहाँ पर आपको मिलेंगी और किस तरह की चाहिए आपको। एंड स्पेशली लाइक इन इस्तांबुल 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि क्लोज़ हैं, उसके अलावा आपकी रिहाइश होनी चाहिए ताकि आपको जो परमिट्स आप अप्लाई करना चाहें रेजिडेंसी के वो आप आसानी से कर सकें। ऑल्सो लर्निंग टर्किश लाइक आई सेड वुड हेल्प यू ग्रेटली, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दे barely speak English. So most of them speaks only Turkish and they understand only Turkish. And also all the government documents are in Turkish language. So it would be better कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप Turkish language को understand करना जितनी जल्दी start करेंगे, that would actually help you greatly. So if you have a steady income, then actually you can appreciate Turkish lifestyle very much. क्योंकि अगर आप यहाँ पे आते हैं और ये सोचते हैं कि जी मैं जॉब ढूंढूंगा, जॉब करूंगा, then I will make lifestyle, then it will be very hard. Because Turkey for foreigner who doesn't have income would be quite difficult. Because again language issue है, फॉरनर्स को इतनी आसानी से जॉब्स नहीं मिलते हैं बिकॉज देयर आर लॉज अगेंस्ट दैट, नॉट अगेंस्ट दैट बट टू सपोर्ट लोकल सिटीजन्स कुछ ऐसे लॉज हैं जो फॉरनर को ईजिली जॉब नहीं मिल पाती, और लोकल जो मार्केट है, लोकल कंपनीज हैं, वो भी जो लोकल सिटीजन्स हैं उनको प्रेफर करते हैं। सो आई थिंक यू कैन ओनली अप्रिशिएट टर्की व्हेन यू आर गेटिंग योर income from somewhere else in a currency which is greater than lira, like USD or pounds or Canadian dollars. So now the third topic would be things to know before you move to Turkey. So again, the first and foremost thing is if you are moving here for residence purpose, so you would be living in an area जो कि residential area होगा, not a tourist area. So language would be the first thing you need to overcome. सो जो आपका डे टू डे कम्युनिकेशन चैलेंज है वो आप आसानी से मैनेज कर सकें। ऑल्सो ऑल्दो इट्स अ मुस्लिम कंट्री बट यहाँ पे क्लोथिंग थोड़ी वेस्टर्न स्टाइल की होती है, सो यू शुड नो कि जब आप यहाँ पर आएँ तो यू वुड एक्सपेक्ट to see a different culture than your country, maybe if you're coming from Pakistan or India or Afghanistan या जहाँ से भी आप आ रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम द मुस्लिम कंट्रीज़, यहाँ पे थोड़ा आपको शायद कल्चर डिफरेंस नज़र आए लोगों की ड्रेसिंग में, लोगों के एटीट्यूड में, बट you have to adjust to that and just mind your own business. They are minding their own business, you mind your own business, there won't be any issue. Also Turkish people especially they smoke a lot, so if you are careful not to breathe the smoke, so you should avoid outside sitting of restaurant areas. यहाँ पे रेस्टोरेंट में स्पेशलाइज्ड एक स्पेसिफिक एरिया होता है जो कि रेस्टोरेंट के थोड़ा सा बाहर होता है, वहाँ पे लोग ज़्यादातर वो बैठते हैं जो सिगरेट स्मोक करते हैं, तो यू शुड नो एंड बी अवेयर ऑफ इट। यहाँ पे थोड़ा सा स्मोकिंग के लॉ को ज़्यादा फॉलो भी नहीं करते टर्किश पीपल, सो दे स्टार्ट स्मोकिंग इन पब्लिक स्पेसेस एज वेल, इफ़ यू आर स्टैंडिंग ऑन बस और इन टैक्सी एंड these kind of thing. So you have to understand that and adjust yourself to that as well. So तुर्क यहाँ पे बहुत मेहमान नवाज हैं, they really appreciate foreigners, they will welcome you, they will feel you comfortable, they will warmly greet you and accepts you. So आपको ये भी देखना होगा कि जाहिर सी बात है जब they are giving respect to you, you should give respect to them and likewise treat them and have made good friends with them.
Turks are very ferocious drivers. So बहुत dangerously drive करते हैं, especially taxi वाले. So you need to be very aware whenever you are crossing roads. आपको देखना होगा कि कोई टैक्सी या कोई गाड़ी या कोई बस या इनकी एक मिनी वैन्स होती हैं, वो तो तेज़ी से नहीं आ रही, and you have to be careful with that as well. That happens a lot actually here. So that's a point which everybody needs to understand. So again, on the employment thing, don't expect to find a job easily here. क्योंकि like again I said, most companies prefer Turkish speaking local citizens. Even if you know Turkish and you are not local, that would actually create challenges for the company because अगर वो आपको hire करते हैं तो as per law they have to hire 5 Turkish citizen to overcome that gap कि हम foreigner को hire कर रहे हैं. So now as per law they need to hire 5 Turkish citizens with you. So there are certain laws जिसकी वजह से they try to hire local talent rather than foreigners. But again there are some fields जहाँ पे foreigner जो talent है या foreigner individuals हैं, they are in high demand. Like if you are a native English speaker, so there are public schools who they are constantly searching for good English teachers or in subjects which are being taught in English. So you can find a good job in that sector. Or if you are relocating it from your company whose office is in Turkey as well, और वो आपको directly यहाँ भेज रहे हैं with the job, that would be great, and I think it would make you financially strong as well. So again, whenever you are out with friends or in general public, do not criticize the government officials, and especially the leaders of this country, and also not the food. Maybe if you have Turkish friends, they would be criticizing it, but I would suggest you do not take part of it. आप उनसे politics और इस तरह की चीज़ों पे और ओवरऑल टर्की के बारे में कोई नेगेटिव बात ना करें, बिकॉज ये काफ़ी उसको नोट करते हैं एंड दे these kind of thing make trouble for you. So next, लिविंग इन टर्की के हम कुछ प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं. लेट मी शेयर सम प्रोज कि फ़ायदे की क्या बातें हैं और कुछ जो कॉन्स हैं, नुकसान तो मैं नहीं कहूँगा बट कुछ ऐसी चीज़ें जिसको यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट. सो लेट्स टॉक अबाउट सम कॉन्स. फर्स्ट वन विच कम्स इन माई माइंड इज़ टर्किश ब्यूरोक्रेसी. यहाँ पे जब आप रेजिडेंस परमिट अप्लाई करते हैं, then actually you get to know the Turkish bureaucracy, because for getting residence permit you have to visit dozens of offices, you have to make a ram of paperwork, डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट्स आपको लेने पड़ते हैं, अरेंज करने पड़ते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स भरने पड़ते हैं. काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन है जो उनके ब्यूरोक्रेसी के फ्रेमवर्क को सपोर्ट कर रही होती है. बट एवरी फॉरेनर unfortunately has to go through with that process. And also remember, most official does not speak English, so it would be very difficult to make them understand कि आप actually क्या चाहते हैं. So one piece of advice, try to make good friend who speaks Turkish and take him with you, ताकि वो आपके प्रोसेस को आसानी से रिजॉल्व करा सके. सेकेंड मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ है, बिकॉज व्हेन यू बाय होम यू हैव अ लॉट ऑफ स्मॉल थिंग्स दैट नीड्स टू बी एडजस्टेड. लाइक कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम हो सकता है, कुछ प्लम्बिंग का काम हो सकता है, कुछ सिविल वर्क हो सकता है. सो यू नीड टू फाइंड पर्सन हु इज़ प्रॉपरली क्वालिफाइड, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी लोग आपको ऐसे मिलेंगे, दे विल से दे कैन डू इट बट दे आर नॉट क्वालिफाइड इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड. कि उस काम में, जैसे अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है तो कहेगा मैं कर सकता हूँ, बट ही इज़ नॉट क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन. हो सकता है वो किसी और ट्रेड में हो और ही कैन जंप इनटू दैट वर्क एंड दैट कैन मैस अप थिंग्स फॉर यू, एंड ऑफ कोर्स दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड मनी. सो एक अदर, आई डोंट थिंक सो इट्स अ कॉन, but you can find a lot of stray animal here. Turkish people love animals,
इन्होंने पेट भी रखे होते हैं घर में, लेकिन स्ट्रे एनिमल्स आर एवरीवेयर and they have a good procedure to manage that as well. They have government hospitals, veterinary clinics जो हैं इनके हैं. ये अगर कोई बिल्ली या डॉग जो है वो कोई अगर बीमार हो जाता है तो ये इसको पिक करते हैं फ्रॉम द स्ट्रीट, ट्रीट देम एंड वापस स्ट्रीट पे छोड़ देते हैं. आप अगर किसी पार्क में जाएंगे आप देखेंगे छोटे छोटे वहाँ पे शेल्टर्स बनाए हुए हैं फॉर कैट्स एंड फॉर डॉग्स. वहाँ पे आप खाना भी देखेंगे लोग डाल देते हैं. सो दैट्स, I think from personal point of view it's just a good thing. They really care about animals and I really admire them for that and I respect that. So that is one thing which everybody needs to know before coming कि stray animals आपको जगह जगह मिलेंगे, but let me assure you it's not like Pakistan or India के अगर कोई dog है वो आपके पीछे पड़ जाएगा. They are super friendly here. थोड़े से कॉन में ये भी चीज़ आ जाती है कि बिफोर यू आर डीलिंग विद एनी लोकल हेयर यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद योर मनी एंड व्हाट कॉन्ट्रैक्ट यू आर मेकिंग. इफ़ यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी यू नीड टू नो कि आप कॉन्ट्रैक्ट क्या बना रहे हैं, कितने पैसों का बना रहे हैं. और आई वुड सजेस्ट कि कोई प्रोफेशनल कंपनी आप हायर करें उस सिलसिले में. ऑलवेज बाय प्रॉपर्टी फ्रॉम professional consultants or professional company or professional real estate agent. Never deal with a person who invites you in a cafe and talk to you and he doesn't have any company to back up. Maybe थोड़े पैसे वो आपको कम दिखा रहा होगा, but legal issues वहाँ पे बहुत हो सकते हैं, fraud हो सकते हैं, scam हो सकते हैं. So always go to a qualified real estate agent company, please. बिकॉज मेरे बहुत क्लाइंट आते हैं यहाँ पे जो मुझे ये स्टोरी बताते हैं कि जी हम फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पे और हमें कोई पाकिस्तानी मिला, ही ऑफर्ड अस गुड प्रॉपर्टीज़ और हमने पेमेंट्स की लेकिन हमें ना प्रॉपर्टी मिली ना पेमेंट मिली. सो प्लीज़ बी अवेयर, डोंट लूज़ योर मनी. बहुत हार्ड अर्न मनी होती है आप लोगों की, सो बी वेरी केयरफुल विद दैट. ऑल्सो ऑफ कोर्स अगर आप रेंटल प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं तो रेंट में भी जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहे हो प्लीज़ बी अवेयर कि आप किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं. आपका जो भी रेंटल एजेंट है उससे मेक श्योर यू अंडरस्टैंड कि जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है वो क्या है. सारी टर्म्स एंड कंडीशन आप पहले उसे डिसाइड कर लें. और नेक्स्ट कॉन वुड बी टैक्सी ड्राइवर्स. बी वेरी केयरफुल व्हेन यू डील विद देम. ऑलवेज मेक श्योर कि आपका जो भी फेयर है वो आप पहले से डिसाइड कर लें और जो पेमेंट है आप उसको उतनी ही पेमेंट करें. और अगर कोई प्रॉब्लम होती है आई वुड सजेस्ट गो टू द पुलिस इमीडिएटली. आई होप ये सिचुएशन ना आए किसी के लिए भी, बट अगेन सिचुएशंस हैपन्स, अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस, और यू नीड टू बी अवेयर कि आपके राइट्स में क्या है. सो कॉन्स तो बहुत हो गए. सो लेट्स टॉक अबाउट सम पॉजिटिव थिंग्स अबाउट टर्की, राइट. सो फर्स्ट फॉर मी इज द वेदर. Weather is extremely good. You can actually walk on the roads in even if it is sunny, if it is in cold, spring ho, autumn ho. You can, people have big terraces in their home or outside उनके parks होते हैं. They bring their foods outside. They eat outside in the grass and on the terrace with the nature. There are a lot of forest here. समंदर है कि बहुत सारे sea lines हैं यहाँ पे. So you can actually enjoy the lifestyle here. आप बहुत नेचर से करीब रह के यहाँ पे अपना लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं. और ऑफ कोर्स if you go outside in sun, in fresh airs, so the healthier you will get. एंड ऑफ कोर्स आपका सोशल इंट्रैक्शन भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ होगा. आप लोकल लोगों से भी मिलेंगे, फॉरेनर से भी आपकी मुलाकात होगी. लॉट ऑफ पीपल डू बारबेक्यू, सेलिंग, कैंपिंग, बीच हॉपिंग, फॉरेस्ट हॉपिंग, trips to forest, trips to caves, ruins. So these kind of lot of activities are available here, and the lifestyle is really amazing, and you will enjoy it. So second for me is food. यहाँ का food बहुत fresh होता है, ingredients are fresh और mostly organic.
और यहाँ पे जगह जगह फूड की ईटरीज के रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे, लोकली मिलेंगे आपको, फाइन डाइन भी मिलेगा आपको, ब्रांड्स भी मिलेंगे. सो यू कैन एंजॉय द फूड cuisines here as well. Another pro for me would be low cost of living. If you compare it with Europe or any Western country, rents are low, food products are low. इसके अलावा जो आपकी यूटिलिटी चार्जेस हैं वो भी काफ़ी रीजनेबल हैं इन कंपैरिजन विद द अदर यूरोपियन कंट्रीज. सो यू कैन मैनेज अ गुड लाइफस्टाइल इन लो कॉस्ट. बट अगेन मैं पहले वाली बात अपनी करूँगा कि अगर आपके पास या तो जो इनकम आ रही है वो उस करेंसी में आ रही है जो कि लीरा से स्ट्रॉन्गर है, सो देन यू वुड एंजॉय दैट लाइफ स्टाइल. अगर आप लीरा में कोई कम रकम कमा रहे हैं यहाँ पे कुछ और जॉब करके, देन यू वुड फेस इश्यूज लिविंग हियर. सो यू नीड टू नो हाउ यू कैन मैनेज योर इनकम टू एंजॉय दैट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल. सो एक जनरल क्वेश्चन है कि एक्चुअली आपको कितनी इनकम चाहिए होती है कि आप तुर्की में रहें. सो तुर्की इज़ एक्चुअली a brilliant country in terms of value over your income. So again depend करता है आप किस शहर में हैं और कितने आप टूरिस्ट एरिया के पास हैं और कितने आप रेजिडेंशियल एरिया में हैं, आप अर्बन सिटी में हैं या आप रूरल सिटी में हैं. लेट्स सपोज अगर हम इस्तांबुल की बात करें तो इस्तांबुल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन तुर्की. It features high rental cost, high property cost, high day-to-day cost. Like if you want to for like transport, food, utilities, and dining. If you want to dine out, so ये cost इस्तांबुल में ज़्यादा हैं. But if you go to let's say बुर्सा, वहाँ पे थोड़ा कम होगा. If you go to another rural city, a low town or low city, वहाँ पे आपको और कम मिलेगा. तकरीबन ऑलमोस्ट 20 to 25% प्राइस डिफरेंस पड़ सकता है फ्रॉम इस्तांबुल टू अनदर रूरल सिटी. बट ऑफ कोर्स देयर आर पर्क्स to live in Istanbul. Istanbul is a metropolitan city. It is actually connection between Europe and Asia. यहीं पे सारी ट्रेडिंग होती है, यहीं पे बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज हैं. Everybody, even from Turkey, other cities are coming in Istanbul to earn their living. So next, I would say कि अगर आप तुर्की में काम करना चाहते हैं तो there are laws under which you have to fulfill the obligatory procedures to get a job. Like if you got a job, you need to work on a work permit. So आपकी कंपनी जहाँ भी आप जॉब करेंगे, they are responsible to apply work permit for you. अदरवाइज ऐसी जॉब्स भी होती हैं जो कि और जॉब्स होती हैं जिसमें आपको वर्क परमिट नहीं मिलता लेकिन आपको सैलरी भी नहीं मिलती इतनी कोई ख़ास. और वर्क परमिट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि 5 years तक आप अगर वर्क परमिट कैरी करते हैं विद एनी कंपनी और एनी नंबर ऑफ कंपनीज, तो आप एलिजिबल होते हैं कि आप सिटीजनशिप अप्लाई करें. एंड दैट इज़ गारंटीड पाथ टू टेक सिटीजनशिप आफ्टर 5 years ऑफ कैरिंग वर्क परमिट. सो अगेन टीचिंग would be the best option for foreigners here, especially English teachers. They can actually get job easily in public schools. Istanbul has a lot of public schools. Ankara has, Antalya has few. So इस्तांबुल में टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी, कंपनीज़ भी हैं. इफ़ यू आर रीलोकेटिंग फ्रॉम योर कंपनी, दैट वुड बी ग्रेट अगेन, लाइक आई सेड बिफोर. सो नेक्स्ट थिंग जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि जी हम तुर्की का वीज़ा कैसे लें और रेजिडेंस परमिट कैसे लें. वीज़ा तो जी आपको अपनी कंट्री के जो भी कॉन्सुलेट है वहाँ से वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा. यू विल गेट अ विज़िट वीज़ा. विज़िट वीज़ा लेके आप यहाँ पे आएंगे. सो द मोस्ट सिक्योर वे टू गेट रेजिडेंस परमिट इज़ टू बाय प्रॉपर्टी है. इस वक्त आज के दिन में जो गवर्नमेंट की रेंज है वो है मिनिमम $75,000 to $80,000 आप इधर इन्वेस्ट करेंगे इन अ प्रॉपर्टी. तो आपको और आपके स्पाउस को और आपके किड्स जो कि अंडर 18 हैं उनको तुर्किश गवर्नमेंट रेजिडेंस परमिट देगी जो कि हर 2 years के बाद आप रिन्यू करवा सकते हैं. बट बी माइंड क्या वो प्रॉपर्टी में रहना होगा आपको, वो प्रॉपर्टी आप बेच नहीं सकते. द बिल्स नीड्स टू बी इन योर नेम. सो
दूसरा ऑप्शन रेंटल का भी है, बट आजकल रेंटल पे ये लोग नहीं दे रहे, फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल ही नहीं दे रहे, और रिन्यूअल भी बहुत मुश्किल से हो रहे हैं, बिकॉज दे वांट द इलीगल फॉरेनर्स टू vacate Turkey as soon as possible. So they are strengthening their processes. कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे वो रुकें जो लेजिटिमेट तरीके से आएँ और यहाँ पे ऑफ कोर्स इन्वेस्ट कर सकें ताकि इकोनॉमी का पार्ट बन सकें। सो यहाँ पे रहने के लिए और भी ऑप्शंस होते हैं टू गेट सिटीजनशिप। यहाँ पे सिटीजनशिप प्रोग्राम्स भी हैं। इफ़ यू वांट टू गेट डायरेक्ट पासपोर्ट विद इन 2 months यू हैव टू इन्वेस्ट $400,000 और उसके डिफरेंट तरीके भी हैं, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। ये वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो गई है, बट आई होप इसमें आपको काफ़ी इंसाइट मिली होंगी। और इसमें अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, और मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, मेरी डिटेल्स आ रही हैं, सो प्लीज़ डू राइट टू मी, डू टेक्स्ट मी, कॉल करें मुझे। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई डिस्कशन करनी हो, कोई रियल एस्टेट के हवाले से कोई काम हो, तो आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।